ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीबॉडी। आई विल स्टार्ट द न्यूज़ नाउ। आज का दिन है अक्टूबर 20th एंड टाइम इन इंडिया इज 9:04. Okay, according to PGMS data, the government received a total of more than 1.4 lakh complaints till September. Of these, the maximum number of complaints, about 1.03 lakh, were received from those departments who do not report directly to the Delhi government. These include MCD, Delhi Police, DDA, and New Delhi Municipal Corporation. In this also, most of the complaints have been received related to Municipal Corporation and Delhi Police. ये है विजिलेंस का पीजीएमएस का रिपोर्ट में ये आया है। लोक शिकायत निगरानी प्रणाली PGMS, that was a thing in Delhi. Repair of roads and pipes are among the works to be carried out in East Delhi's Patparganj using the MLA fund of jailed AAP leader and former Deputy CM Manish Sisodia, following court approval of his request to use the money for his constituency's development. In a significant development for the residents of Patparganj, the Delhi court has granted approval for a series of development projects initiated by former Deputy Chief Minister and MLA of Patparganj, Manish Sisodia. ED's power to issue summons under PMLA Section 50 doesn't include power to arrest. The court emphasized the distinction between issuing summons and making arrest, stating that these powers are separate. The development path of North India through this expressway will be dedicated to the people of India soon, and it will open employment, trade, and business opportunities. Bhagwant Mann ne bola. Nitin Gadkari reviews Delhi Katra Expressway with Bhagwant Mann. Delhi High Court reserves order on AAP MP Sanjay Singh's plea against his arrest and remand. Punjab Congress leader Jagvinder Singh Aam Aadmi Party join किया है. He has joined Aam Aadmi Party. राम टेम्पल ट्रस्ट कैन रिसीव फॉरेन डोनेशंस। आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया में क्राई ऐसा बहुत सारे अच्छे एनजीओस को गवर्नमेंट ने फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने के लिए वो मना कर दिया, बट अयोध्या की राम टेम्पल के लिए ट्रस्ट विल रिसीव फॉरेन डोनेशंस। ऑब्वियसली बीजेपी के कोशी में चला जाएगा। Modi government says that inflation is lowest now and center hikes DA by 4% bonus for non-gazetted railway employees now. और भी बहुत सारे चीजें किया है गवर्नमेंट ने obviously. Once in a while in India, reservations debate rages across the society. BJP favors economy plus social reservation. Congress favors only social reservation, but AAP delivered. IIT entrance from Delhi government schools 2017 में 12 students have joined IIT. 2023 में 720 students have joined. Repetition makes a fact seems more true regardless of whether it is or not. Understanding this effort can help you avoid falling for propaganda, says psychologist Tom Stafford. Illusion of truth that was created by the liars. Delhi court, Ross Avenue Court extends Manish Sisodia's judicial custody till November 22nd. First list of candidates of Mizoram Assembly Elections 2023. आम आदमी पार्टी ने 4 लोगों को सेलेक्ट कर दिया। पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने। उसके लिए नंबर भी जारी किया है 9646101912, 1-800-180-1512, 9646106835. Cabinet Minister of Delhi Rajkumar Anand inaugurates construction of Nehru Nagar Sabji Mandi Road, Patel Nagar. फिर इसके बाद लैंडलेस टू सून गेट प्रोप्राइटरी लैंड राइट्स ऑन लैंड अलॉटेड टू देम promises Delhi CM. Furthermore, the Delhi government is taking appropriate actions on all issues related to rural areas, including extended Lal Dora boundaries. Kailash Gehlot said that the Delhi government in July 2017 convened a special session of Delhi Legislative Assembly and passed a resolution. इस रेजोल्यूशन को काम करने के लिए ऑलमोस्ट 6 साल हुआ अभी। The former district sessions judge has joined Aam Aadmi Party in Punjab. Bhagwant Mann, 35,000 youth perform ardhas at Harminder Sahib for making Punjab drug free. Internet services in Manipur will be restored soon, CM Biren Singh ne bola hai. In an endeavor to enhance transparency and security within Delhi government schools, the Directorate of Education and the Public Works Department are collaboratively drafting a comprehensive standard operating procedure SOP. The Delhi government will run a month-long campaign to curb industrial pollution starting October 20, according to the Environment Minister Gopal Rai. 6 teams have been set up to keep an eye on the fuels being used in over 1,700 industrial units in Delhi.
So आप लोगों को पता होगा आजम खान wife and son have been given 7 years jail sent to Rampur jail. But interestingly प्रधानमंत्री का दो birthday से there is a confusion between his birthday in August 29th and September 17th. उनमें से कौन सा डेट करेक्ट है किसी को पता नहीं है. But he obviously is exempt from this. Delhi Education Minister Atishi on Wednesday inspected the construction work of the new social building in Paschim Bihar along with Education Department and Public Works Department PWD officials. This upcoming four-story world-class school in Paschim Bihar has approximately 129 rooms. The school is equipped with 13 excellent labs, 2 libraries, an auditorium and more. The construction work of the school is nearly 90% complete. No official letterhead. Mahua Moitra calls businessman Hiranandani's affidavit a joke. Israeli forces target Orthodox Church in central Gaza Strip. New regional rapid transit system trains to be known as Namo Bharat. इसके कारण नोएडा के आसपास land rates and all the real estate has actually improved. वो होने वाला है it seems. Avoid repeated adjournment request over unavailability of arguing counsel. Bombay High Court ने बोला है. Canada removes 41 diplomats after India threatens to revoke their immunity. Don't punish Raje because of me. Ashok Gehlot takes a swipe at BJP. PM Modi to inaugurate India's first rapid rail today. Easing norms of importing IT hardware, says Centre. Close poll battle plays out on the field of many a bloodbath. बस्तर में ये बोल रहा है. CBI raids premises of Gujarat man who posed as official from PMO. Section 50 of PMLA does not give ED power to arrest a High Court. Inflation likely to stay stable during the festive season. Curbs to remain Food Secretary ने बोला है. Modi asks MP, has written a letter to MP voters for direct support in letter. Uniquely designed Vande Bharat trains to run in Kashmir soon, Railway Minister ने बोला है. NIA arrests second suspect in Bishnupur bomb blast case in July. Qatar में verdict on 8 jailed former Indian Navy personnel likely this month. Skill centers in Maharashtra will prepare local youth for global jobs, PM Modi ने बोल रहा है. Karnataka cabinet approves proposal to declare 21 more talukas on drought hit. UP government makes committee to probe fatal road accidents. At 31.5%, Himachal road transport rate, road accident rate higher than the national average. Data बता रही है कि डेटा बता रही है कि हिमाचल में 31.5% Himachal Pradesh has got the highest road accident rate higher than the national average. For example, national average is 29.3% है road traffic accidents as per lakh of population. Himachal Pradesh has the highest rate of 31.54. Similarly, for deaths in road traffic accidents per lakh population, Himachal has the highest rate of 13.7% against lakh of population against national average of 10.93. In terms of vehicles, RTA माने road traffic accident. RTS per 1,000 vehicles was 15.1 for India, while Himachal has a higher rate of 17.37. So basically कितने हुए अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे कम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टू स्टेट्स में, गोवा एंड दिल्ली में. इन दोनों जगह पे सबसे कम हो रहे हैं. दे हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इट सीम्स. एंड अगर इफ यू लुक इनटू द हिमाचल प्रदेश का फेटलिटीज अगर देखोगे, फेटलिटीज हैव जंप टू 1200 इन द ईयर 2022. 2017 में दे वर ओनली 764 से अभी 2022 में 1203 तक हो गए हैं. इंजरीज अगर देखा जाए तो 5452 हुए. दिस इज व्हाट हिमाचल का डेटा. MMRDA gets note for twin tunnels under SGNP. 122 trees to be felled for CM Shinde's pet project MMRDA.
हरियाणा हाइक्स आशा वर्कर स्टाइफंड बाय 2100। हरियाणा का आप लोगों को पता होगा कि वन ऑफ द लीस्ट होता था। अभी इलेक्शंस जल्दी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 2100। National Medical Commission cancels 145 MBBS admissions in the state in Haryana. Will make laws to help gig workers. Delhi CM ने बोला है. Delhi government is going to set new rates for October 1st for the minimum wage. DDA auction में 450 properties up for sale in Delhi. Registration open till November 6th. Mumbai holds its breath. Alarm bells ring, but no one's listening. The warnings came as early as last year with several counters clocked alarm. The number of poor air quality days in December, January 2022-2023 almost doubled from 17 in the 2-month period in 2019-2020. Hamas-Israel war, dozens fear dead after Israel airstrikes hit Gaza Church. Israel has as of now warned 24 hospitals to vacate. Obviously वहां पे भी लोगों को मारेंगे and they will say misfire हुआ है. Center rolls back its plan to license laptop and PC imports. Nitari judgment के बारे में UP Deputy CM is saying that it will be reviewed, will appeal to Supreme Court if it all it is required. 162 teachers from Punjab government schools transferred to schools of eminence. To push for caste census, Congress to organize OBC convention in Lucknow. Farmers, producers, organizations. So, in the past 2 years, Eastern UP has emerged as a hub for vegetable and fruit exports. Progressive farmers have associated with FPOs of the region and become agents of change. FPOs money, farmer producers organizations or companies have countered this challenge. An FPO is a collective of farmers who have holdings or work in the geographical cluster. ये यूपी में ईस्टर्न यूपी में especially close to 200 MOUs have been signed with FPOs, 68 FPOs and 37 farmers in areas of commodity marketing and input supply, technical leadership and financial linkage. Government also इसके ऊपर थोड़ा facilitation कर रही है. Akali Dal asks Punjab's Assembly Speaker to train Aam Aadmi Party MLAs on SYL canal issue. HSGMC elections, votes to be prepared afresh in Haryana. Punjab becomes first state to approve highest number of applications under the AIF scheme. AIF scheme माने आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक होता है. Punjab has achieved the number 1 position in the country for approving the highest number of applications under the agriculture infrastructure scheme established for the welfare of farmers of the state. On this achievement, Horticulture Minister S. Chetan Singh Jaurmachra honored the entire dedicated team among with scientists of agro investigations in his office at Punjab Civil Secretariat. Harjot Singh Bains, Punjab के education minister, ordered to complete Nangal flyover by November 30th. District Barnala achieves ODF plus status, becomes first district of Punjab to achieve this milestone. BJP will not let even a drop of water go out of Punjab. Party ready to make any sacrifice. Sunil Jakhar ने बोला है. Government withholds approval of 3 finance bills set by Bhagwant government. Wants to report to president for calling. Total wetland area increased by 4.2% between 2006 and 2007, 2006-2007 and 2017-2018. गवर्नमेंट ने टोटल वेटलैंड एरिया इंक्रीज कर दिया है, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है. बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है गवर्नमेंट का वेटलैंड. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो टॉयलेट सिंक टॉयलेट रिलेटेड जो भी लोकेशंस होता है ना, उसको भी वेटलैंड में ऐड कर दिया है. वेरी इंटरेस्टिंग की चीज ये है कि swamps, mangroves, estuaries, ponds and lakes वो भी lakes ही होते हैं. So government ने has decided that any place, जो कुछ भी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा wet area होता है ना, उस चीज को भी गवर्नमेंट ने अपने wetland definition में ऐड कर दिया है. टोटल वेटलैंड एरिया को गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि फॉर एग्जांपल इफ एनीबडी हैज कोई सेप्टिक टैंक या कोई भी वाटर रिसोर्सेस को स्टोर करने का जहाँ पे भी लोकेशंस होते हैं ना,
उन चीजों को भी गवर्नमेंट ने वेटलैंड बोल के ऐड कर दिया है. As of 2017-2018, nearly 22% of the wetland consists only in one state, that is called Gujarat. Interesting चीज ये है कि in Gujarat only 7% of the area is wetland है, but the remaining 15% of the area government ने अपने आप बना दिया है, wetland बना दिया. Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Uttar Pradesh accounted for around 7%, each, while Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka and Assam contributed 5% each. That is nearly 70% of the wetland were concentrated only in 8 states है इंडिया में. So एक और इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया में, वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर वेटलैंड पेनिनसुला अगर देखा जाए ना तो डेक्कन पेनिनसुला माने जो साउथ में जो कुछ भी है ना, वहां पे वेटलैंड सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 9%. वहां पे वेस्टर्न घाट्स में इंक्रीज हुआ है 8% इंक्रीज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में 7% हुआ इंक्रीज हुआ है, डेक्कन पेनिनसुला में, हिमालयन एंड सेमी एरिड रीजन्स में इंक्रीज हुआ है 4% एंड दे हैव ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 5% के आसपास है. ओके फाइन. नेक्स्ट एक और डेटा है एवरेज सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. सीवीसी में जितने भी एवरेज नंबर ऑफ केसेस आते हैं दे आर रिड्यूसिंग डे बाय डे, माने ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ सीवीसी के ऊपर जो कंप्लेंट्स आते हैं वो रिड्यूस भी हो रहे हैं. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो भी डिस्पोज हुए थे वो हुआ था 2003 में, बीजेपी रूल के टाइम पे ही हुआ था ये. 2003 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीवीसी केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड, 8042 केसेस डिस्पोज हुए, and 2003 में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वर आल्सो रिसीव्ड व्हिच इज एक्चुअली गुड. सो उसके बाद से इंडिया में सीवीसी का डिक्रीज होना शुरू किया है and the 2014 में number of cases that were disposed by CVC are 5862 and India has reached the rock bottom. CVC का उद्घाटन हुआ था 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इनॉग्रेट किया था पहली बार. उस कमीशन में जब इनॉग्रेट हुआ था 1981 में पहली बार 3915 सीट्स केसेस आए थे. For the first time in the history of India, number of CVC cases have reduced to the lowest, that is 2228 cases आए थे 2022 में. This is the first time in the history of India that people are not even actually registering in CVC. Central Vigilance Commission में कोई register भी नहीं कर रहे हैं. And the number of cases that were disposed also is for the first time in the history of India 3 digit में है. 674 cases ही उन्होंने dispose किया है Central Vigilance Commission ने. And interestingly, Central Vigilance Commission में number of cases are reducing year on year from 2014 onwards. 30% गिर रहा है. There is a far cry between by the previous CVC saying that by the end of in the next 7 years CVC will become a toothless organization in India. ऐसा वो लोग बोल रहे हैं. 30% fall is happening in CVC it seems. NMDC's Bastar steel plant won't be privatized, ऐसा अमित शाह ने बोला है. JDS के देवगौड़ा sacks rebel leader CM Ibrahim as party's Karnataka president, makes his son Kumaraswamy ad hoc state chief. National Investigation Agency today filed a supplementary charge sheet in a special court in Ahmedabad against gangster Lawrence Bishnoi in a case involving the seizure of around 39 kg of heroin by the Gujarat police. This case initially began in Ahmedabad Anti-Terrorism Squad when it registered a first information report in September 15, 2022. Okay, so farmers की MSP hiked by government. Government ने क्या किया? MSP wheat के ऊपर government ने MSP hike किया था 7%. यूपी में hike किया था just before elections. मध्य प्रदेश में just before elections अभी हाइक किया. पंजाब में भी गवर्नमेंट ने हाइक किया था 167 रुपीज just before elections. हरियाणा में हाइक किया है, राजस्थान में हाइक किया. सैफफ्लावर में सैफफ्लावर में एमएसपी हाइक किया था 2.67%. लेंथल में हाइक किया था 7.08%. रेपसीड एंड मस्टर्ड में हाइक किया था 3.67%. बार्ली में हाइक किया था 6.63%. ग्राम में हाइक किया था 1.19%. गवर्नमेंट ने ये MP, Rajasthan, Telangana are big producers of rabi crops for which center has announced this increase. ये सब कुछ increase किया था polls के लिए. Jobs data.
इंडिया में जॉब्स डेटा के बारे में एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कवरिंग जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक एक एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे गवर्नमेंट ने किया था। एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। इस डेटा में गवर्नमेंट बोल रही है कि जॉब्स इंडिया में बहुत इतने ज्यादा जॉब्स है कि एम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, माने इन द वर्ल्ड इंडिया में एक ही कंट्री होगा जहां पे जो महिलाएं एंड जो लोग डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं ना, उनको भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि दीज आर आल्सो पीपल आर इन द एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड वर्क फोर्स। इसमें वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया में जो जॉब रेट गवर्नमेंट दे रही है उसमें जो फोर्स्ड लेबर होते हैं, जो किल्स में काम करते हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद इंडिया में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग होते हैं ना, उनको भी ऐड कर दिया। देयर वाज सम इंक्रीज इन दिस इवन फॉर अर्बन वुमेन बट टू सम स्मॉलर एक्सटेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ भी लोग वर्क करते हैं उनको भी ऐड कर दिया। ऑल्सो इंक्रीज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज, जो डोमेस्टिक हेल्प में जाते हैं या फिर काम करते हैं, मुफ्त में काम करते हैं, उनको भी जॉब्स में ऐड कर दिया था। फिर इसके बाद increase in regular employment, generally seen to be the most preferred type of work, is the only significant positive feature, but the increases in both rural and urban areas are relatively small and well within the margin of error of surveys. What would really matter here is whether this has been associated with improvement in the wages or salaries. गवर्नमेंट बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली घट गया है बाय कीपिंग ऑल दीज नंबर्स इनटू इंटैक्ट, बट द अमाउंट ऑफ सैलरीज दैट आर रिलेटेड टू दीज एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में गवर्नमेंट मम हो रही है। The sectoral disposition or composition of the employment is also improvement, and here the data provided is a disturbing picture. Far from an increase in the number of share of manufacturing and modern services in employment, it appears that the agriculture has been the main driver for employment for rural women, showing an increase of nearly 3 percentage points in 2022. India is perhaps the only country where unpaid helper in a family enterprise is counted as an employment. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नंबर्स एक्चुअली गवर्नमेंट ने। आप लोगों को अगर नंबर्स बता दो, 2016 में शुरू किया था गवर्नमेंट ने ये प्रथा, जिसमें अनपेड हेल्पर इन द फैमिली ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट की रेशियो में उसको ऐड कर दिया। 2016 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 2015 तक जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता था वो ड्रास्टिकली कम हो गया 2016 में। तब से स्लोली नोबडी हैज एक्चुअली ट्रैक्ड दिस। अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जब नंबर्स को क्लोजली इफ यू लुक इनटू इट, unpaid helper accounts to 37% of the employment in India. It seems 37%। 2020 में 36% है, 2021-2022 में 36.5% तक ऐड हुआ है, 2022-2023 में 37% है। ईयर ऑन ईयर द अनपेड हेल्पर इन द फैमिली एंटरप्राइजेस का जो भी लिस्ट होता है ना, वो द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कॉर्पस में ये इंक्रीज होता ही जा रहा है। गवर्नमेंट 50,000 daily commuters in India feel that public transport is inadequate due to key reasons like overcrowding, maintenance, and ticketing problems. After hearing the argument, Judge Rajawat said that the press is the fourth pillar of democracy, and if it is not allowed to function and operate independently, it would cause serious injury to the foundations of our democracy. This is for the case of devices that are seized from the wire. इन द खेड़ा पब्लिक फ्लॉगिंग केस, खेड़ा में आपको पता होगा कि गुजरात के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मुस्लिम लोगों को पकड़ के उनको बांध करके हाथ को दे हैव फ्लॉग्ड देम। द हाई कोर्ट उनके लिए सभी 4 एक्यूज्ड को, गवर्नमेंट पुलिसमैन को हैव गिवन ए सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? दे हैव गिवन ए सेंटेंस ऑफ 2000 रुपीज फाइन फॉर फ्लॉगिंग ए मुस्लिम गाय आफ्टर टाइंग देम, and also 14-day civil sentence, civil imprisonment दिया था उनको। Very good sentence for them. Supreme Court today, October 19th, issued notice to the Delhi Post on the police by NewsClick founder and journalist Prabir
Purkayaksha and his HR head Amit Chakrabarti challenging their arrest. फिर इसके बाद tribal votes are also decisive in nearly 40 general seats. There has been a perception that the BJP government's attitude towards tribals has been condescending, while Congress approach has been that of empowerment. Rise in poor quality service jobs India में बहुत जा रहा है. War impacts India's financial market. IPOs raised but PPLs are been falling in India. Okay. Issuance of initial public offer of equity shares. Equity shares, funds mobilized by non-finance enterprises through issuance of equity to the public, or in other words, initial public offers were subdued in the current fiscal so far. Funds raised through IPOs increased marginally by 1.6% to rupees 135.5 billion rupees during April-September 2023 compared to 133.4 billion raised similarly during April-September 2022. There has been a significant jump in employment in service sector with the addition of close to 9.7 million jobs in services in the past 2 years. But interesting चीज है कि there was a rise in poor quality services jobs. The rise of sector's workforce expanded from 146.3 million in September 2021 quarter to nearly 156 million in the September 2023 quarter. Despite the substantial increase in the number of jobs in the services sector, the quality of these jobs have quite disappointing and has reduced actually. रिटेल ट्रेड में -3.2% है एंड पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज में -0.6 एंड होलसेल ट्रेड में -0.2, आईटी एंड आईटीईएस में 0.5, एजुकेशन में 0.6 है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में 0.8 एंड पर्सनल नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज में 3.3. Adani set to refinance 3.5 billion debt taken for ACC Ambuja by अभी इसको refinance करेगी. Retail leasing grew by 46% year on year during January-September 2023. Political and religious parties in Kashmir on Wednesday condemned the attack on hospital in Gaza, Israel, calling for international intervention from the stop the Israeli aggression and violence. Union cabinet approves 13 gigawatt renewable energy project in Ladakh.